Good afternoon, everyone. This is Karan Pai, and today, as we know, we have our weekly expiry. So, we'll be taking a look at what the NIFTY actually looks like. So, good afternoon, everyone. This is Karan Pai speaking. Welcome all to our weekly expiry webinars. What I would want to know is that my you guys are able to hear me fine and that my screen is visible. Just put it in the chat box just as a confirmation so that I know that you guys can hear me. Okay, so we'll start with the session. एंड एज वी गो अहेड इनटू द वेबिनार आपके अगर कुछ क्वेरीज है कुछ आपको पूछना है कुछ बोलना है देन प्लीज type it in the chat box, please type it in the live comments, and we'll pick it up from there. So if you look at the Nifty Financial Services, correct, ये spot chart है, this is the daily chart. So after a strong fall that we've seen in the past, I think 1 2 3 4 5 6 सेशन में एक बीट डाउन आया था स्टार्टिंग 27th of September, एंड ये जो डाउनफॉल था दैट हॉल्टेड अराउंड 7th of October, ऑन 27th of October. एंड अगर आप लोग यहाँ पर चार्ट पर देख पा रहे हो, करेक्ट, सो या सो इफ यू गाइस कैन सी इन द चार्ट्स, 100 डे के पास जो है ये इंडेक्स ने एक सपोर्ट लिया था. 100 days, this of course on the chart जो आप देख रहे हो, that is basically a 13 day exponential moving average. And यहाँ पर while I was explaining our earlier webinars, I had actually plotted a 100 day EMA here. So जब आप देख रहे हो कि 100 day EMA के पास जो है हमारे इंडेक्स ने, it seems to have taken a bit of support. एंड वहां से हम लोग को थोड़ा एक अपवर्ड ड्रिफ्ट इंडेक्स में दिखाई दे रहा है. सो इफ यू सी द प्राइस एक्शन ओवर द रीसेंट 6 सेशंस, इट हैज बीन एन ओवरऑल अपवर्ड ड्रिफ्ट. सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड. Yeah, so there has been a general upward drift in the past 6 sessions. But we have had positive days, we have had negative days. But overall, what I'm able to see right now is that the Nifty Financial Services Index has actually managed to go above the short-term moving average, that is the 5, and also above the, at the moment it is placed exactly at the 13-day EMA. सो ओवरऑल अगर आप देखो तो एक थोड़ा बाउंस है ऑफ द पास्ट फॉल दैट यू सीन. सो इसमें अभी हम लोग हाउ आर वी पोजिशनड एग्जैक्टली, इफ यू जस्ट लुक एट दैट. या सो अगर हम लोग देखें कि हाउ वी आर पोजिशनड राइट नाउ, so what I would do is just plot a Fibonacci retracement from the recent high to the recent low. So recent high being the high that was
posted on the 26th of September. I hope अभी सभी को charts जो है हमारे दिखाई दे रहे हैं and सो हाँ सो 27th of September का जो हाई था 26th of September का जो हाई था वहां से लेकर जो रिसेंट लो था दैट इज 7th of October का लो टू बी वेरी प्रिसाइज 25,201 का हाई था एंड लो जो था 23,120 का था सो वहां से अगर आप देखो सो राइट नाउ वी आर प्लेस्ड एट अ 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल सो 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल ये मैंने आपको पहले भी बोला है थोड़ा क्रूशियल है एंड एज ऑफ नाउ यू डोंट नीड टू गेट इनटू द रिगमोरल ऑफ what a Fibonacci retracement is, what Fibonacci in general is, but yeah एक आपको इसमें आपको अभी इतना देखना है कि these are crucial levels and these normally tell कि कहाँ पर probable supports आएंगे कहाँ पर probable retracements resistances आएंगे and at the same time we can also gauge कि current जो correction आ रहा है या एक जो change of trend है current वाला as compared to the previous up move or down move कहाँ पे positioned है so these are a few things that Fibonacci levels help us understand and so अभी अगर आप देखो so we are currently around the 38.2% level so definitely at a crucial level so we'll switch to our regular trend lines multiple touch point levels to understand what the price action could be सो अगर मैं सिंपल हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइंस डाल दूं तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि 24,057 24,100 का जो लेवल है वहां पर एक थोड़ा रेजिस्टेंस आएगा and that also actually coincides with the 50% extension level 50% retracement level so that falls at around 161 but यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है somewhere around 24,100 का रेजिस्टेंस है based on the horizontal trend line and if it manages to go above that so I'll just zoom in this chart area and यहाँ पर अगर आप देख सकते हो so between 1st of October and the 3rd of October there is a major gap एक थोड़ा गैप एरिया यहाँ पर बना हुआ है एंड इट ऑल्सो एग्जैक्टली मैचेस विद द 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल सो नेक्स्ट लेवल जो होगा मेरा फ्रॉम अ बिट ऑफ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू लॉन्गर टर्म जब मैं बोल रहा हूँ probably अ वीक और सो नथिंग मोर देन दैट So वो point of view से अगर मैं देखूं तो probably 24,100, 24,400 is where we might see the resistances coming in. Now for the very short term time frame, what I like to do is go on to the hourly charts, see what the chart structure is at this point. And यहाँ पर आप देख सकते हो there is a proper up move and if I was to look at and apply the same analysis जो मैंने बड़े time frame पे किया था that is horizontal supports and resistances I see a support zone of somewhere around 23,700 and 23,600 so ये जो zones है मेरे आने वाले sessions में they become a bit important and वहीं पर ऊपर की तरफ अगर मैं देखूं जो hurdle हम लोग को वहां पर दिख रहा था around 24,000 का वहां पर it was 24,061 but यहाँ पर दिख रहा है कि around 24,000 there is a bit of hurdle and once we are above that 24,000 hurdle the next level that we could look out for is probably 24,400 24,300 zone so all in all एक थोड़ा इसमें upward drift दिखाई दे रहा है but can we say that it's a change in trend as of now no so for the trend to change we would require it to go above the 61.8% retracement level बट अगेन वो कोई ऐसे स्ट्रिक्टली स्पीकिंग हार्ड एंड फास्ट रूल ऐसे नहीं है सो फॉर द ट्रेंड टू चेंज यू फर्स्ट नीड टू सी दैट देयर इज मोमेंटम इन द अप मूव जो एट द मोमेंट आपने डेली चार्ट पर अगर देखा होगा तो इट इज लैकिंग इट बट नॉनदलेस ये एक अपवर्ड ड्रिफ्ट है सो मोमेंटम इसे बोलते हैं व्हेन देयर वाज अ फॉल यू सॉ स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल्स करेक्ट सो देयर वाज एक्चुअली गुड मोमेंटम but up move जो है the size of the candle from if you just compare the real body also it is quite small so थोड़ा एक lack of momentum हम लोग को वहां पर दिखाई दे रहा है then what we would do is go on to NSE India and quickly check Nifty financial yeah and go on to the option chain and हमेशा की तरह what we will do is look for the OI concentration एंड यहाँ पर अगर आप देखो तो देयर सीम्स टू बी एटीएम के आसपास जो है थोड़ा कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा सो यू हैव टू लुक अ बिट फर्दर फ्रॉम द एटीएम सो अगर आप देखो तो 24,000 24,050 24,100 but there is a bit of
कंसंट्रेशन. सो ऑल इन ऑल अगर मैं इन तीनों का सम अप करूं तो तकरीबन 6 to 7 से ज़्यादा ये 7 lakhs का OI एक्यूमुलेशन वहां पर है. दैन दिस इज ऑन द कॉल साइड. एंड वहीं पर अगर हम लोग पुट साइड में देखें तो एंड एक्सपायरी में आपको बता दूं बिकॉज वी आर लुकिंग एट एन इंट्राडे ट्रेड, दिस इज टुडेज एक्सपायरी. एंड अगर मैं पुट साइड में ऑब्जर्व करूं तो पुट साइड में यू सी अ बिट ऑफ कंसंट्रेशन अराउंड 23,800, 23,850 एंड 23,700, ये जोन में जो है थोड़ा OI कॉन्सेंट्रेशन दिखाई दे रहा है. सो ब्रॉडली अगर मुझे ये फिर निफ्टी का अगर मुझे रेंज देखना है देन आई वुड से दैट 23,700 ऑन द डाउन साइड, 23,600 700 ऑन द डाउन साइड. वहीं पर 24,000 जो है विच इज ऑल्सो राउंड फिगर. एंड यहाँ पर अगर आप देखो इट वॉज ऑल्सो हॉरिजॉन्टल लेवल एंड ऑल्सो द 50% रिट्रेसमेंट लेवल. So these levels they seem to be a bit crucial. So 24,000 on the upside, 23,700, 23,600 on the downside. That seems to be the broader range for the day. Um, यहाँ तक अगर किसी को कुछ query है, what I would suggest is put it in the chat box. I mean the live chat. We'll try and pick it up. In the meanwhile, what I would do is go onto the NSE website and just show you what are the stocks that are actually moving, what are the sectoral indices that are actually moving. So for stocks, you have to just go to the market data and click on equity and SME data. वहां पर आप ऊपर इंडेक्स सेलेक्ट कर सकते हो. नाउ वी आर बाय डिफॉल्ट ऑन निफ्टी 50. एंड अगर आपको यहाँ से कुछ भी इंडेक्स का अगर आपको कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखना है, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल सर्विसेज की आज एक्सपायरी है, सो आपको देखना है कि कौन से चल रहे हैं, कौन से थोड़े रुके हुए हैं. सो you can also sort it based on the percentage change. So as of now, HDFC, AMC, ICICI Bank, they seem to be the strong performers. And वहीं पर अगर आप देखो बजाज फिनेंस, कोटक बैंक, they seem to be a bit on the lagging side. Nifty 50 की अगर मैं बात करूँ, again the advanced decline at the moment seems to be favorable. I mean seems to be a bit tilted towards the bears because आप देख सकते हो declines में 34 है, वहीं पर advance में सिर्फ 16 है. एंड परसेंटेज चेंज के हिसाब से अगर मैं इसको सॉर्ट करूं एंड आई ट्राई टू लुक एट द स्टॉक्स दैट आर परफॉर्मिंग, देन समथिंग लाइक भारती एयरटेल, बीपीसीएल, आईसीआईसीआई बैंक, दे सीम टू बी आउट परफॉर्मिंग एट दिस पॉइंट. एंड सॉरी दे सीम टू बी इन द पॉजिटिव टेरिटरी एट दिस पॉइंट. वहीं पर अगर मैं देखूं समथिंग लाइक बजाज ऑटो, विप्रो, बजाज फिनेंस, दे सीम टू बी टेकिंग अ बिट ऑफ बीटिंग राइट नाउ. MNMB है, सो ब्रॉडली समथिंग लाइक ऑटो सेक्टर्स में थोड़ी गिरावट दिखाई दे रही है, सो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. And then to look at the NSE sectors, what I would do is click on the NSE, then go to view all indices and simple. So यहाँ पर आप इसको CSV में डाउनलोड करके you can sort it as you want, but then we have access to our internal software जहाँ पे हम लोग को दिखाई दे रहा है कि there are of the 12 sectors. Now these 12 sectors are plotted here because they are the ones that we feel move the market. So of the 12 sectors, the 7 sectors they seem to be in the declining territory. So as expected, auto metals जो है उसमें आज काफी beating आई है. एंड वहीं पर अगर मैं देखूं तो गेनर्स, मीडिया एंड रियल एस्टेट, दे सीम टू बी द टॉप गेनर्स. I mean realty, not real estate, realty, they seem to be the top gainers as of now. So that's the part. That's all from us with regards to what the market is doing, what the general tilt of the market is, what our technicals are telling. यहाँ तक if you have any query, put it in the chat box. And what I would suggest is, we have a few recorded sessions on YouTube. अगर आप YouTube चैनल में जाकर अगर हमारे लाइव सेशंस के अंदर जाओगे तो you will find a playlist probably जिसमें हम लोगों ने options and technicals के videos cover किए हैं. So please take a look at that. Please go through the sessions that we have covered with regards to options, how to look at options from a mathematical standpoint of view is what we try and explain in those sessions. So अगर आप वो अगर अप्लाई कर पा रहे हो then well and good. अगर आप नहीं कर पा रहे हो, आपको क्या queries आ रही है, just let us know and we'll try to sort it out. So we'll be live for another 2 minutes and उतने में if you have any query we'll pick it up. अगर किसी को कुछ query नहीं है then we'll end the session here. Another 2 minutes is what we have.
In the meanwhile, what I'll do is quickly also show what Nifty is doing at this point. So something very similar to Fin Nifty. इसमें भी अगर आप देखो तो काफी एक गिरावट आई, and now we are seeing a bit of an upward drift. सॉरी अबाउट दैट, ये जो वायरल है बहुत लोग अफेक्ट कर गया. सो एट द मोमेंट अगर आप लोग देखो ये येलो लाइन जो है दैट इज द 13 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वहां से हमें थोड़ा रिजेक्शन आते हुए दिखाई दे रहा है. एंड दिस इज डिस्पाइट अ पॉजिटिव ओपन दिस मॉर्निंग. सो अगर आप देखो तो पॉजिटिव ओपन कितने पॉइंट का था कल के क्लोज से, इफ यू जस्ट कैलकुलेट अराउंड 58 से 60 पॉइंट्स का जो था ओपनिंग था व्हेन आफ्टर द इंडेक्स ओपन एट अराउंड 25,186.30. एंड अभी अगर आप देखोगे इट इज ट्रेडिंग अराउंड 25,064. सो अगर आप हाई से अगर देखो, आई मीन इंडेक्स कितना गिरा है, दैट इज क्वाइट सब्सटैंशियल. सो तकरीबन 150 पॉइंट्स जो है हम लोग को दिख रहा है यहाँ से यहाँ पर कि with the index trading at around 25,060, 25,063, all these levels are spot, keep that in mind. So तकरीबन सेशन के हाई से which was 212, मतलब 25,212, वहां से अगर आप देखोगे तो तकरीबन 150 पॉइंट नीचे from the sessions high is where we are trading right now. So एक थोड़ा इसमें प्रेशर आते हुए दिखाई दे रहा है. एंड द मेजर लेगार्ड्स जैसे मैंने आपको उसमें दिखाया, सो in our internal software, so auto metals, they seem to be a bit under pressure at this point of time. वहीं पर अगर आप देखो something like media, something like FMCG, they seem to be the outperformers for the day. Outperformer नहीं बोल सकते, but they seem to be having modest gains. So again, 1 minute is what we have left. So if you could just type in your questions in the live chat, we'll try and cover it. So looks like we don't have any query. So what we'll do is we'll end the session here. And thank you for joining us. See you all tomorrow when we will